Okay, so today we're actually going to do a few examples of quantum operations, or hopefully this will give you a better idea of what is the utility of cross operators. ये ऑपरेटर सम जो ये बुक है नाइल्सन चोंग की, इसमें उसने उसे क्रॉस ऑपरेटर का वर्ड उसके लिए कम ही यूज किया है, यूजिंग ऑपरेटर some people use cross operator, but it's the same thing. So we'll study some examples. So hopefully you will get an idea that how we can model the influence of environment on our system. And I'll take a few examples, and for each example, I will try to convince you that they do represent, some physical situation. The channels that we will study today, and I'll try to keep things mathematically simple today, so we can discuss the physics side. So to give you a summary, we will study bit flip, phase flip, bit phase flip channels, depolarizing channel, dephasing channel, amplitude damping channel. So ये जो channels हैं ये आज हम देखेंगे. And just to re-emphasize, the word channel doesn't necessarily mean that you are putting a qubit on some wire and something here, and it's being transmitted at some place else, and then what is happening to, we are calling this channel. This is a channel, but the word channel that we are using, it's more general than that. अगर आपकी qubit यहाँ पे पड़ी भी है और the time is passing and environment is doing something to it, those operations we also use the word channel or map. Okay, so let's start with a few examples. So the first example is the bit flip channel or bit flip map. So let me first give the mathematical model. So this is a model where we specify the map like this, that if some density matrix corresponding to a physical system is given, so this is a physical phenomena that doesn't do anything to your system with probability 1 minus p, and with probability p it flips the bit. Since it flips the bit, and let's say your starting state is 0, so this means that when I apply x on both sides, this state becomes 1 1. Or if the starting state is 1, we apply x, it becomes 0 0. Or if it is a superposition of 0 and 1, the 1 0 interchanges. So this is a mathematical model, and this represents a situation where your environment is sort of in resonance with your system. आप imagine कर सकते हैं अगर आपके पास एक 2 level atom है, ठीक है, level 1 level 2 है, और जो आपका environment है, suppose it's a radiation field, कोई आप किसी लेजिंग मटेरियल के अंदर एक एटम पड़ा हुआ उसको देख रहे हैं, and there are lot of photons around it with an energy which is exactly equal to the difference of 2 levels. So there are sometimes photons would be absorbed. अगर आप zero state में हैं, you can absorb a photon and go up. अगर आप 1 state में हैं, you can still by stimulated emission your system can go down. जो environment को हो रहा है, जब हम लेजर को पढ़ रहे होते हैं, so we are more concerned with the environment. So we are thinking कि कैसे वो amplify हो रहा है. But right now we are concerned about the atom. So atom is our principal system, and that radiation field around it is the environment. और ये जो probability p है, this sort of represents, अगर आप यूं कह लें, उस radiation density को represent कर रही है. अगर photons बहुत ज्यादा है, तो definitely there's a very high probability for flipping going on. अगर photons बहुत कम है, the probability would be less. So this is a channel that models these types of physical situations. अगर आप देखें तो इसकी जो cross operators हैं, we can define them like this. For example, I can define one operator as 1 minus p square identity, जो किसको correspond करता है,
and the other operator is p square x. With these, और आप check कर सकते हैं that they do satisfy the axioms. Axioms को check करने के लिए essentially you have to check only one thing, and that is that EI dagger, EI sum over all i's gives you identity. That you multiply everything with its dagger from the left side and add up all those results, you should get an identity. X square identity होता है, ये identity है. So multiply ये square root खत्म हो जाएगा, 1 minus p plus p is 1. Perfect. So this is one channel, and you know, I think मैंने आपको शायद homework में एक problem दिया है जिसमें I ask you to work out what happens to, let's say, a single qubit state undergoing this bit flip channel. So you can work out if your initial state is let's say written like this, where you can map this onto a block sphere, and you can work out by plugging it here and finding new values of Rx, Ryz to see what happened to this 2-bit state. So I'm not going to worry too much about this. Acha, let me ask you this question to see कि अगर आपको समझ आई है कि नहीं आई. नॉर्मल लैब में जो ज्यादातर हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं जिसमें वी आर ट्राइंग टू आइसोलेट आवर क्वांटम सिस्टम, लेट्स से आप हाइड्रोजन एटम की बड़ी प्रिसाइज मेजरमेंट करना चाह रहे हैं या क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट बनाना चाह रहे हैं. सो उस सूरत में जो यू ट्राई टू कूल डाउन द सिस्टम, यू ट्राई टू लोअर द प्रेशर सो दैट यू नो अदर एटम्स अराउंड इट गो अवे, यू हैव अ वेरी सॉर्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम at a very low temperature and pressure. So उस environment को can you use this channel to model that system environment interaction? For example, सबीता से पूछते हैं. Good. So you say no. So can you argue कि क्यों? जी? पर आप थोड़ा सा सोचें कि उस environment में क्या हो रहा है. हमने इस मॉडल की बात की है, ये ऐसा मॉडल है which sort of models your system with a bath around it, and the bath is a radiation field with photons having energy equal to the inner band gap, to this difference of energy level. So उस सूरत में will we have a situation like this? नहीं, environment तो हमेशा है, लेकिन क्या वो environment ऐसा है जो इस चीज को मिमिक करता है? नहीं करता. You are right, we don't know, but let's imagine कि जो एनर्जी गैप है दोनों लेवल्स का, it's higher than let's say kbt, much higher than kbt. जो थर्मल फोटॉन की एनर्जी है उससे काफी ज्यादा गैप बड़ा है. It actually doesn't, or even if it does, p might be going to like 0.00000 like that. क्यों? क्योंकि अगर आपका ये सिस्टम है और जो एनर्जी गैप है अगर ये आपने आइसोलेट किया हुआ है तो इसके ऊपर रेडिएशंस कौन सी आ रही है? मेनली जो आपका एनवायरनमेंट है उसकी थर्मल रेडिएशन ही है ना. अगर आपका जो सिस्टम है वो लेट्स से 30 केल्विन पे है, तो जो भी चैम्बर है, जो आपकी लैब है, अगर लेट्स से लैब को आपने शील्ड भी कर दिया तो देयर इज अ चैम्बर which is enclosing it at 30 Kelvin, so it would have a black body radiation like this. So इस जो ये वाला peak है, this is going to be very far away at an energy which is far removed from this, assuming कि जो ये level है it's higher than, much higher than kBT. So आपका जो system है it is somewhere here and the radiation spectrum is somewhere over here. Okay, so there are very few photons available that have energy gap equal to this. For example, let me give you a concrete example. First करें ये gap 1 electron volt है. So even at 300 Kelvin जो हमारा room temperature है, there are very few photons of 1 electron volt. Otherwise, this is a very typical band gap. All of this building would be lighting up. अगर आपका जो room temperature पे जो radiation field है उसमें बहुत सारे photons ऐसे होते हैं.
क्योंकि ये सारी अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, रेडिएट कर रहे होते हैं, अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, रेडिएट कर रहे होते हैं। ओके, यू गेट दिस पॉइंट? सो इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर आप ये यूज करेंगे, पी हैज टू बी वेरी स्मॉल। और इसीलिए जो क्वांटम कंप्यूटर में पीपल ट्राई टू कूल दिस चैम्बर डाउन, क्योंकि जितना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, अलबत्ता अगर आप इधर भी हैं तो फिर भी देयर आर क्वाइट अ फ्यू फोटॉन्स व्हिच आर इंटरैक्टिंग विद योर सिस्टम। सो यू वांट टू कूल डाउन योर सिस्टम टू एटलीस्ट अंडर 4 केल्विन। ठीक है, उसकी वजह यह है कि 4 केल्विन तक आपकी माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है यूनिवर्स की। ठीक है, तो उनकी वजह से एक फोटॉन फील्ड तो हर जगह पे है। ठीक है, सो और अगर आपका अपना टेम्परेचर ऑपरेटर्स का 4 केल्विन से ज्यादा है तो आपका जो नॉइज है वो माइक्रोवेव बैकग्राउंड नॉइज से भी ज्यादा। और अगर आप अपने आप को 4 केल्विन से कम कर लें, लेट्स से 1 मिली केल्विन पे आ जाते हैं, तो यू आर ओनली नाउ लिमिटेड बाय द यूनिवर्स माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दैट रियली वी कैन गेट रिड ऑफ। ओके, एंड इवन इन दैट केस देयर आर वेरी फ्यू photons available here. और उस केस में all you have to do is make sure that this energy gap is higher than the photons that are available from the microwave background radiation if you want to do some controlled quantum physics with your system. तो आपका एनर्जी गैप जो है, जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के वजह से इस फोटॉन्स हैं उनकी ये जो एनर्जी है ये से ज्यादा हो, then this is not going to disturb it much. But still there is something that is always going on with a very small p. Okay, let me take another channel, another example. It's called phase flip channel. So this is a channel that we can model like this, that with probability p the phase is flipped, and with probability 1 minus p nothing happens to your system. अब ये जो सिस्टम है, जस्ट टू रीट्रेट, z जो है वो 0 को कुछ नहीं कहता और 1 को माइनस साइन देता, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फेज फ्लिप चैनल. दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन चैनल, और उसकी वजह ये है कि नॉर्मली अगर आपके पास कोई सिस्टम है और देयर इज डेफिनेटली एन एनवायरनमेंट ऑल द टाइम, एंड इवन इफ द फोटॉन्स आर बीइंग स्कैटर्ड फ्रॉम इट, अगर अब्सॉर्ब नहीं, ये तो चैनल मॉडल कर रहा है अगर अब्सॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है, which is usually not the case unless you put your atom in a very strong radiation field. But here let's now imagine that our system has an energy gap which is much higher than the photons that are available around it. So then it means if a photon is coming to our system, it has to scatter off because it can be absorbed here. So the photons are being scattered off. So ये जो अब scattering process है, what this actually does, it doesn't change the state of the system itself, but it changes the state of the environment. Okay, the photon is going here, and after scattering, the photon might be or might not be in another state. So the environment is changing its state, but not the system directly. So इस तरह की सिचुएशन को ये चैनल मॉडल करता है. Let me show you why. So first of all, अगर इसके क्रॉस ऑपरेटर्स लिखें तो I hope you can appreciate quickly that E naught can be taken as 1 minus P identity, and another operator can be P square root Z. And let me discuss this channel in little bit more detail because this is an important channel.
Okay, so for single qubit, let's see what this channel does. So suppose that we have a qubit somewhere in the block sphere. I can write it as like this. This, by the way, this phase flip channel has another name. It's called dephasing channel. क्यों? क्योंकि with the passage of time, the phase decays. Okay, so let's see what happened to a general state of a single qubit, which is like this. So E of rho, let me call it rho prime, would be from there 1 minus, sorry मैंने वो square root गलती से डाल दिया, this is just 1 minus P into rho की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, this is over 2 I plus RXX RYY RZZ plus P Z by 2 I plus RXX RYY RZZ into C. So let's work it out. So ये बन देगा, अगर मैं ये जो रो प्राइम है इसको भी लिख लूं यूं करके, हाफ आई प्लस आर एक्स प्राइम आर एक्स आर वाई प्राइम आर वाई आर जी प्राइम जी। तो जिसका मतलब है कि जो आर एक्स प्राइम है इट्स ट्रेस एक्स रो, आर वाई प्राइम जो है इट्स ट्रेस वाई रो एंड आर जी प्राइम इज ट्रेस जीरो। तो ये आर एक्स आर वाई प्राइम इससे इस तरह से निकाले जा सकते हैं। यू कैन चेक, अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स इसका ट्रेस जीरो, ये एक्स स्क्वायर इसका ट्रेस, ये आइडेंटिटी है इसका ट्रेस टू हो जाएगा, टू टू से कैंसिल आर एक्स प्राइम आ जाएगा क्योंकि इस एक्स वाई का भी ट्रेस जीरो, एक्स सी का ट्रेस भी जीरो है। ओके, सो लेट्स नाउ फाइंड आर एक्स प्राइम आर वाई प्राइम आर जी प्राइम। So Rx prime would be trace x row prime। अब इस पे अप्लाई करते हैं, ये 1 माइनस पी ओवर 2 तो कॉमन आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया और ट्रेस किया तो जीरो, इसको x से मल्टीप्लाई किया ट्रेस किया, ये x स्क्वायर आइडेंटिटी है तो इसका ट्रेस आ गया 2, एक्स वाई का ट्रेस जो है वो जीरो है, एक्स जी का ट्रेस भी जीरो है। अब इधर देखते हैं, ये p बाई 2 तो बाहर आ गया, ये हुआ z स्क्वायर क्योंकि z इधर से आ गया, z इधर से z स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज आइडेंटिटी, और फिर एक एक्स से और मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, एक्स का ट्रेस आ गया जीरो, तो यहां पे आ जाएगा आर एक्स ट्रेस ऑफ एक्स जेड, और इधर आ जाएगा आर वाई ट्रेस ऑफ एक्स जेड वाई जेड प्लस आर जी ट्रेस ऑफ जेड स्क्वायर आइडेंटिटी जेड, और एक एक्स आ गया एक्स जेड। ओके, अच्छा अब आप ये मैट्रिक्स अलजेब्रा से आराम से चेक कर लेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ये जो एक्स जेड स्क्वायर है ना, इसका ट्रेस होता है -2, और इसका ट्रेस जीरो आएगा, इसका ट्रेस भी जीरो आएगा, यू कैन चेक इट। तो ये चीजें यहाँ पे पुट करें तो आई विल गेट 1 माइनस पी आर एक्स, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा -2 से, तो ये आ जाएगा माइनस आर एक्स, तो दिस इज 1 माइनस 2 पी आर एक्स। तो जो आर एक्स प्राइम है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन चेक आर वाई प्राइम, तो आर वाई प्राइम आ जाएगा 1 माइनस 2 पी आर वाई, और जो आर जी है वो आर जी के बराबर आ जाएगी।
So it means a state along z-axis on a block sphere doesn't get changed, and it makes sense, right? क्योंकि जो इट्स अ फेस फ्लिप चैनल, राइट? अगर आपके पास जीरो स्टेट है तो फेस फ्लिप होने के बाद भी उसने जीरो ही रहना। अगर आपके पास वन स्टेट है फेस फ्लिप के बाद उसने वन, क्योंकि वो ग्लोबल फेज आ जाएगी ना, जो माइनस साइन आएगा, जीरो जीरो ही रहती है, वन माइनस वन भी होगा तो वो ग्लोबल ही रहेगी। ओनली इफ यू हैव आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट इन योर स्टेट, देन द स्टेट चेंजेस। और चेंज किस तरह से है? चेंज इस तरह से आएगी। Let's say this is your block sphere, and this will change like this. So any state, let's say, which is along y-axis, it's a pure state. Even if you start it, then after it passes through this channel, the state would have become mixed. क्यों? क्योंकि इसकी जो ये लेंथ है वन से कम होके तो इतनी हो जाएगी, तो ये 1 minus 2p 1 minus 2p. So the block sphere becomes this ellipsoid, which clearly tells us that even if you start with a pure state, it becomes a mixed state. And if you start with a mixed state, and if the state is not, by the way, अगर आपकी state starting में z axis के along है, it's going to remain along z axis. It's not going to, अगर आप pure से start करते हैं, you will remain pure. अगर आप mix से start करते हैं, mixture जो है उसकी length पे फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इस structure में देखें, अगर वो ये process होता रहे बार बार, तो ये जो डायरेक्शन है ये श्रिंक करती जाएगी। लास्ट में हमने ये एग्जांपल क्विज में की थी, एक्चुअली की थी, लेकिन क्लास में शायद हमने की थी, उसमें हमने p हाफ किया हुआ था। सो व्हेन p वाज हाफ, दिस वाज 0, दिस वाज 0, ठीक है? सो p हाफ corresponds to, you know, a very strong dephasing, very quick dephasing. Okay, so this was dephasing channel, and let me give another example, which is a combination of these two channels. It's called bit flip and phase flip channel. Okay, and this is basically this. Since जो y है, it's iota xz, so that's why it is called both the bit flip and the phase flip and the bit flip channel. Okay, क्योंकि दोनों काम इसमें हो रहे हैं. So you can, you know, think of this channel as modeling that process, you know, which happens in the presence of strong radiation field. All right, and because there's a lot of scattering going on, and there's a lot of absorption emission going on as well. So you can actually work it out that what this does to the input state. और ये भी मैंने जो problem है, it's in the homework. जी? जीरो नहीं, बिल्कुल हाँ, नथिंग हैपन, वो उसी एक्सेस का लॉन्ग रहेगा, ठीक है? और it could be, you know, an equally mixed state of 0 and 1, or maybe a pure state only along zero axis, along z axis. So this is what we call decoherence. Is a very broad term, okay? Decoherence is not something, a concept which is, you know,
uh, which encompass a single phenomenon. Anything that reduces the pureness of a state is called decoherence. So this is decoherence going on. वो देखिए, that is a part of a coherent interaction between an external electromagnetic field and your atom. That is a unitary evolution. That first of all is not a non-unitary evolution. So in the unitary evolution, you can circle back and forth because you can reverse. This process is irreversible because once the pureness of a state has been lost, you can't invert it back. पर खैर यहाँ से हो सकता है some of you can think maybe we can come up with a channel कि जिस तरह ये जो है ये इस sphere को ellipse में transform कर रहा है, and perhaps we can have a channel that can invert this ellipsoid into this sphere, but that is not going to be a sort of a physical channel. क्यों? क्योंकि जो उसमें वो ये करेगा कि कुछ states जो है, let's say आप कहते हैं कि ये state है, इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो RX बड़ा हो जाए, तो उसमें कुछ स्टेट हो सकता है वो 1 से भी बड़ी हो जाए. They will go out of the block sphere, which is not a physical state. So the inversion of decoherence is not possible. So anything that reduces the pureness of a state is called decoherence. वो जो if it is the maximally mixed state, it's going to remain maximally mixed state. Okay. And for this case, in general, it's not possible. Okay, there are channels. There are two types of channel. Unital channels ऐसे channels हैं कि अगर आप उनको starting state identity हो, so you still get identity out. और ये जो channels हैं, जैसे ये देखें, अगर ये row identity है, so what will I get? I will get identity. This is a unital channel. जो dephasing channel है वो भी unital channel है, जो BitPhase channel है वो भी unital channel, but not all channels are unital. कुछ जो channels हैं वो I को किसी और state में भी transform कर सकते हैं. But in general, if you start with a mixed state, you will end up with a mixed state. लेकिन it can be shown that it cannot increase. Actually, I don't know. I'll try to show it for something. One channel कि जो trace row square है, which is the purity, this doesn't increase, which means कि अगर आप mixed state से भी start करेंगे तो जो row square का trace है, it's not going to increase by these decoherence channels. Okay, so let's take another example. This is actually another very important channel. It's called Depolarizing Channel. So this is a channel that essentially combines all the previous three channels, and it is defined by this with probability 1 minus p, nothing happens to your state, and with probability p, you get a maximally mixed state. So now this is an evolution which essentially is telling us that आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी state है, it's going towards maximally mixed state because of something that is going around the system. And since this identity, we can show that this identity can be written as half rho plus x rho x y rho y 0. So this identity, can be expanded like this. You can show it mathematically.
अब इसको देखिए, व्हाट इज दिस थिंग, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आई हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, 1 माइनस 3/4 p rho plus p/4 x rho x y rho y 0 c. That bit flip, phase flip, and bit phase flip, all three processes are happening with equal probability at the same time. So this is something, a worst case channel. What is the worst thing, that can happen to your channel? अगरचे it's still not very general enough, क्योंकि हो सकता है जो ज़्यादा general depolarizing channel है, you should be modeling it this with, let's say, probability p1, this with probability p2, and this with probability p3, right? It makes sense because all three processes might not be happening with the same probability. But that turns out to be a little bit intractable mathematically. So this is a bit simpler form of this depolarizing channel. And or yes, a channel hai कि if you have some physical system and even if you are almost completely ignorant about what's going around with this channel, this can be a very good approximation to start with about modeling that system. कि जो noise है वो जो भी कर रहा होगा, it's going to be one of these three things. So let's imagine all three things are happening. So let's start. What's the worst case scenario for your quantum system? So that's why this depolarizing channel is actually a very important channel. इसमें आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर्स हैं वो अगर आप इसको देख के डिफाइन करें, so you can define one operator, 1 minus p square identity, p over 4 square root identity, p over 4 square root x, y and z. या अगर आप इसको देखें तो you can have 1 minus p over 4 square root identity and then p over 4 square root x, y and z. So this is how we can model it. लेकिन अगर हमने इसके साथ काम करना है तो perhaps this is the easiest thing to work with. Let me अच्छा, ये जो चैनल है इसका एक व्यू ये है कि यू कैन थिंक ऑफ दिस थिंग लाइक दिस, कि जो आपका इन्वायरमेंट है डूइंग समथिंग लाइक दिस. कि this is your environment and this is your system. So what is happening that depending on this control, so ये classically mixed state है. अगर यहाँ पे बात का 1 आता है तो 1 आने का मतलब ये है these two states are swapped. So this is the maximally entangled state of a single qubit. And instead of getting your own state, you are getting a maximal entangled state. And when this line in the environment is at 0, then you are getting your own state as it is. So this is what this is sort of representing. So the state of the system that you're seeing here is a classical mixture of the actual state of your system plus and the maximally mixed state corresponding to that system. And this can be actually generalized to higher dimension very easily. अगर आपका 10-dimensional system है, let's say, या 16-dimensional है, इसमें 4 qubits हैं, this can simply be I by number of dimensions, so that represents the maximally entangled mixed state. Okay, जी. कि ये देखिए, ये सर्किट ये कह रहा है कि अगर आपका यहाँ पे 0 आ रहा है, which is coming, which we are defining is coming with probability 1 minus p. So then you swap these two things. Since you are reading your system state over here, so instead of rho you are getting I over 2. और अगर इस लाइन पे 1 है, so you are getting your with probability with 1 you are swapping and with probability 1 minus p you are not swapping. क्योंकि कंट्रोल को हम डिफाइन करते हैं, अगर 0 है तो डू नथिंग, अगर 1 है तो कंट्रोल ऑपरेशन होगा. सो योर जो स्टेट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सिस्टम की, वो कभी तो एक्चुअल स्टेट होती है और कभी वो
मैक्सिमली मिक्स स्टेट होती है करस्पॉन्डिंग टू दैट सिस्टम विद दीज प्रोबेबिलिटीज। सो लेट्स सी। अच्छा, इसमें अगर आप पहले, मैं वो ट्रेस फोर्स के वाला सवाल बाद में करूंगा। लेट मी जस्ट सी व्हाट हैपेंस टू अ सिंगल क्यूबिट स्टेट। फॉर डीपोलराइजिंग चैनल, जो अभी हम देख रहे हैं, डीपोलराइजिंग चैनल, अगर आप आउटपुट स्टेट को रिलेट करें इनपुट स्टेट से, लेट्स सी व्हाट इज आर एक्स प्राइम। दिस इज ट्रेस ऑफ एक्स रो। इसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट, सॉरी, ट्रेस ऑफ x रो प्राइम, आई विल हैव 1 माइनस p ट्रेस ऑफ x रो प्लस p by 2 ट्रेस ऑफ xi। ये जो x है इसका ट्रेस 0 है, और ये x रो का ट्रेस जो है वो rx है। तो दिस इज rx प्राइम। सिमिलरली जो ry प्राइम है, इट्स 1 माइनस p ry, rz प्राइम इज 1 माइनस p r। तो इट मीन अब जो ब्लॉक स्फीयर है, इट्स isotropically shrinking under this channel. So no matter what your initial state is, after going through this channel, it's going to decohere under this depolarizing action. And चूंकि हमने वो तीनों प्रोसेस इसमें डाले हुए हैं, it's sort of uniformly shrinking the state from all sides. किस चीज पे? कौन सा रिजल्ट सेम रहेगा? नहीं, अब सेम, अब पता नहीं मुझे आप क्या मुराद ले रहे हैं। सेम से मुराद अगर तो आप ये ले रहे हैं ना कि लेट्स से कि इनिशियली ये वेक्टर है इस स्टेट का, व्हेन इट गोस थ्रू दिस चैनल, इसकी जो डायरेक्शन है वो वही रहेगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स इक्वली स्केल हो रहे हैं, तो इसलिए इस वेक्टर की लेंथ तो कम होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्योंकि वो सिमिलरली स्केल हो रहे हैं। सो इसका मतलब है कि स्टेट जो है वो उसकी डायरेक्शन सेम है, अलबत्ता इसकी प्योरिटी कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो प्योरिटी है इट्स द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, एंड इफ यू चूज दिस p is equal to 1, you can see that you can shrink the length in just one pass through this channel. नहीं, अब कौन सी किस चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए है कि आई अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन व्हाट डू वी मीन बाय मिक्स स्टेट, ठीक है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय प्योर स्टेट। तो हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटीज है मेजरमेंट्स की वो चेंज ना हो, लेकिन जो स्टेट है वो डिकोहर हो चुकी है, वो मिक्स हो चुकी है। ठीक है, और वो ऐसे है कि लेट्स से अगर आपकी स्टेट इनिशियल स्टेट है, सपोज लेट्स से psi है 1/√2 0 + 1,
ओके, अब अगर ये स्टेट डीकोहेर होके ये स्टेट बन जाए, अब ये दोनों डिफरेंट स्टेट हैं। अगर आप कंप्यूटेशनल बेसिस में मेजर करते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये स्टेट है या ये स्टेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी वही है, इनकी भी प्रोबेबिलिटीज वही है। जो फर्क पता चलेगा कि स्टेट ये है या ये है, वो पता चलेगा अगर आप इसको किसी चीज से इंटरफेयर करते हैं, आइदर विद इटसेल्फ या किसी और स्टेट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करता हूं इस वेक्टर के अलांग, ठीक है, तो इस स्टेट की प्रोजेक्शन जो है वो मुझे जीरो मिलेगी। अगर आप मैं इस स्टेट को इस बेसिस में मेजर करूं ना, जो इस वेक्टर के जो इसके ऑर्थोगोनल है, आई विल गेट जीरो, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन उसके अलांग जीरो है। अलबत्ता जो ये स्टेट है, ये अब रिप्रेजेंट कर रही है इसको या इसको, और अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूं इसके अलांग, तो मुझे दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ मिलेगा। सो जो मिक्स स्टेट है और जो प्योर स्टेट है, जस्ट इन सम हो सकता है किसी ना किसी बेसिस में दोनों की जो मेजरमेंट प्रोबेबिलिटीज है वो सेम हो, बट दैट डजंट मीन के वो दोनों सेम स्टेट है। इसलिए तो मेजरमेंट से वी कैन नेवर कंप्लीटली डिटरमिन द स्टेट वेक्टर ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि यू गेट मॉडुलस स्क्वायर ऑफ थिंग्स along certain basis। ओके, तो हो सकता है कि ये चीज चेंज ना हो, अलबत्ता जो स्टेट है वो डीकोहर हो चुकी है। ओके, इसका बाय द वे जो डेंसिटी मैट्रिक्स होगा वो होगा हाफ, इसका जो डेंसिटी मैट्रिक्स होगा वो होगा ठीक है। तो इसका डेंसिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो यू विल हैव ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और इसका लिखेंगे तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। इसीलिए sometime people talk about the off diagonal element as representing sort of coherence of the state। अगर से ये थोड़ा लूज टर्म है, क्योंकि टू टॉक अबाउट दिस के अगर कोई स्टेट है और उसके सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो वो मिक्स स्टेट है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट आल्सो से दैट द स्टेट इज रिटन इन it's it's corresponding to sort of the Smith decomposition के इसके ऊपर वो सारी positive values हैं। In that case then, and sorry, तो जो off diagonal element जीरो हैं और जो इसके number of non zero entries हैं diagonal पे वो more than one है, then this is a mix, totally mixed state। और अलबत्ता अगर आपके पास एक डेंसिटी मैट्रिक्स हो जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो, तो यू कैन नॉट से इट्स नॉट अ टोटली मिक्स्ड स्टेट, बिकॉज़ यू कैन ऑलवेज गो टू अनदर बेसिस। जैसे लेट्स से अगर मैं ये हाफ है, ये हाफ है, आई माइट गो टू अनदर बेसिस इन व्हिच आई गेट द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो असल चीज तो वही ट्रेस रो स्क्वायर है, ठीक है, दैट टेल्स यू इफ द स्टेट इज प्योर और मिक्स्ड। इफ इट इज वन, then it's a pure state. If it is not one, then it's a mixed state. But this is sort of loosely speaking. Sometimes people talk about off diagonal element like this, and उसका मतलब जो है ना वो ये है. Okay, so this is depolarizing channel. Let's, और ये भी unital है. Let me discuss another channel, uh, which is not unital, but it also represents an important physical process. It's called amplitude damping channel। ये जो चैनल है ये काफी फिजिकल प्रोसेस है उनको मॉडल करता है। फॉर एग्जांपल, स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ एटम्स। फर्ज करें आपके पास एटम है और
वो हायर एनर्जी स्टेट में है, एंड वी नो दैट आफ्टर अ व्हाइल इट डिकेज, टाइम कम ज्यादा हो सकता है, बट दैट्स हाउ दिस मोस्ट ऑफ द क्वांटम सिस्टम बिहेव। और अगर मैं इस डिके प्रोसेस को थोड़ा ज्यादा आइडियली मॉडल करूं ना, इस तरह से कि देयर इज नथिंग अराउंड हियर, ठीक है, which is equivalent to saying that my environment is in its ground state. क्योंकि अगर environment खुद भी उसमें, you know, there are a lot of photons going on, so the decay might not happen, or might be, you know, the process might be modified. तो इसका मतलब है, अब अगर मेरा जो environment है वो जीरो स्टेट में है, और जो प्रिंसिपल सिस्टम है वो वन स्टेट में है, तो इट विल डिके आफ्टर अ व्हाइल। अलबत्ता अगर आपका प्रिंसिपल सिस्टम स्टार्टिंग में ही ग्राउंड स्टेट में है और आपका एनवायरनमेंट भी ग्राउंड स्टेट में, इसका मतलब है कोई फोटोन अवेलेबल नहीं है किसी भी एनर्जी का, देन दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज फॉरएवर। सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसेस वी कैन मॉडल विद द एम्पलीट्यूड डैम्पिंग। इस ये जो मॉडल है, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड डैम्पिंग मॉडल या एम्पलीट्यूड डैम्पिंग चैनल। और इसके अलावा यू नो दिस इज, अगर आपके पास, और ये देखें ये ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें एनर्जी भी डिसिपेट हो रही है, क्योंकि आपके सिस्टम में अगर यहाँ पे है तो एनर्जी है, जब इधर आ गया तो एनर्जी कम हो गई, इसलिए एनर्जी हैज गॉन टू द एनवायरनमेंट। सो जो एनर्जी डिसिपेशन प्रोसेस है, या बाज़ औक़ात इसको कहते हैं कि थर्मलाइजेशन प्रोसेस, कि अगर आपका एनवायरनमेंट लेट्स से एब्सोल्यूट जीरो पे है and your system is at some higher temperature T, slowly it will be radiating photons and coming to its ground state. So the system is thermalizing, coming to equilibrium with its environment. So all of these processes where energy is decaying to the environment, and environment is not adding any energy to the system, we keep the environment at you know, initially in the ground state, then this process, this model is called amplitude damping channel. और इसका जो मॉडल है, let's try to prepare its model. So what I was saying, if the principal system is in ground state and environment is taken to be in the ground state initially, nothing happens. अलबत्ता अगर सिस्टम जो है, प्रिंसिपल सिस्टम, वो एक्साइटेड स्टेट में है, environment, I'm assuming that at the start it's in the ground state, then this will go, principal system will decay, and the environment can, okay, so there's now two possibilities. Either nothing happens, or the system decays. So this is the model that we refer to as amplitude damping. जी जी, आएगा, ये डेंसिटी मैट्रिक्स नहीं लिखी, मैंने स्टेट लिखी है। ओके, बाय द वे, अभी इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, आई एम शोइंग अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, सो आई कैन आल्सो राइट द यूनिटरी ऑपरेटर ऑफ दिस प्रोसेस। ये यूनिटरी ऑपरेटर क्या होगा इसका भला? 0 0 जो है वो 0 0 को जा रहा है, so 0 0 going to 0 0, so 0 0 going to 0 0, और जो 1 0 है, it's going to 1 0 and 0 1, so 1 0 going to 1 0 with probability 1 minus p square root, and with probability p square root 1 0 going to 0 1. Okay, so this is going here, this is going here. So this is my unitary operator that represents the combined behavior of the principal system and the environment. Everybody is okay? All right. अब इस unitary operator से let me get the corresponding cross operator for this. जी जी,
देखना ये यही चीज शो कर रहा है ना ये प्रोसेस को, कि 0 0 स्टेट 0 0 में जा रही है। तो अगर मैं इसको अब राइट साइड से 0 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, इसके साथ भी जीरो है, इसके साथ भी जीरो, इसके साथ वन, आई गेट 0 0। सो 0 0 गोइंग टू 0 0। और यहाँ पे अब ये जो 1 0 स्टेट है, इट्स गोइंग टू दिस स्टेट। इसका मतलब है अगर मैं इसको 1 0 पे अप्लाई करूं तो आई विल गेट दिस स्टेट। अब देखें ये 1 0 है, ये भी 1 0 है, इनर प्रोडक्ट ओके 1 1 आ जाएगा, सो आई गेट दिस। तो नॉर्मली जो स्टेट एनिलेट हो रही है उसको हम राइट पे लिखते हैं, और जो क्रिएट हो रही है उसको लेफ्ट पे लिखते हैं। Okay, so this is my unitary operator of principal system and environment. I can get cross operator from this, जो अब वो पिछले वीक वाली हमने टेक्निक पढ़ी थी। So जो E naught है, it was the, let me come this, और जो E1 है वो ये था, ठीक है। Where I have to make sure कि ये जो contraction है ये environment की स्टेट पे टेक प्लेस करे। I'm tracing out the environment. तो E naught फिर आ जाएगा, ये जो जीरो है ये एनवायरनमेंट वाला है, ठीक है। तो इस पे अगर आप अप्लाई करें तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये एनवायरनमेंट वाले हैं राइट साइड वाले। तो इधर से जीरो आएगा इसके साथ, और इसके साथ भी जीरो आएगा, तो आई गेट 0 0। इधर से भी जीरो आएगा, इधर से भी जीरो आएगा, आई गेट 1 माइनस पी स्क्वायर रूट 1 1। इधर से जीरो आएगा, इधर से जीरो, तो ये 0 1, ये जीरो हो जाएगा, तो दिस इज नॉट कमिंग इन। जो E1 है वो आ जाएगा, ये 1 0, इधर से ये इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये इनर प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, so I'll get only this p square root 1 0, तो 0 1। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो बाय द वे ये बन जाएगा 1 0 0 1 माइनस p स्क्वायर रूट, और इसको उसकी फॉर्म में लिखें तो 0, ये 0 1 है, 0। अब ये मैंने इस तरह से डिवाइड किया कि जो मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है, इट वाज नॉट इंट्यूटिव इसको डायरेक्टली हम क्रॉस ऑपरेटर कैसे लिखें। इससे पहले जो हमने मॉडल देखे हैं उसमें वो इंट्यूटिवली क्लियर था कि उन प्रोसेसेस को अगर हमने डायरेक्टली मॉडल करना है तो कैसे कर सकते हैं। जी। हम उस फॉर्म में भी ला सकते हैं। जी जी। ओके अच्छा, इसमें आप ये चीज चेक कर लीजिएगा खुद ही, मैंने चेक किया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट और सम है, दिस डज एड अप टू आइडेंटिटी। और बाय द वे अगर हम इसको चैनल को प्रोसेस लिखें तो ये बनेगा दिस ई नॉट प्लस, तो ये ई नॉट है ये वाला, इसका डैगर भी यही आ जाएगा। सो आई विल गेट जो रो है ना, लेट मी राइट इट एक्सप्लिसिटली दिस टाइम एज रो 0 0, रो 0 1, रो 1 0, रो 1 1। तो अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये बन जाएगा रो 0 0 प्लस p रो 1 1 1 माइनस p स्क्वायर रूट रो 1 रो 0 1 and 1 minus p square root rho 1 0 and 1 minus p rho 1. So
ये जो रो है इट्स बीइंग ट्रांसफॉर्म टू दिस रो. This is the action of this dephasing channel. Okay, let me do one thing. First, we want to see what happens to the system in time t. And suppose that I divide it into n intervals, each of delta t. And suppose in delta t, and suppose the decay rate of the system is gamma. So this is the spontaneous emission decay rate. Okay, per unit time, kya decay rate hai. If this is gamma, so what's the probability of decay in time delta t? In delta t, the probability of decay would be gamma delta t. Okay, and suppose what is the let's find out what is the state of the system after time t. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक यूनिट एक टाइम इंटरवल है उसमें जो प्रोबेबिलिटी p है डिके रेट टाइम डेल्टा t, और लेट्स ट्राई टू डू इट n टाइम्स, क्योंकि ये तो मैंने एक दफा किया ना, और उसमें जो p है वो लेट्स से ये ले ले, बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर टाइम t. क्योंकि इनिशियल स्टेट तो वो हमने लिख दी है p00 p01 1011. So to do this, all I have to do is do this n times, right? और उसके लिए I can actually write the result directly. अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें ना, तो हो ये रहा है. Let me explain it here. ये देखें क्या होगा कि इसको p से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, इसको 1 माइनस पी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 माइनस पी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो गई है, और ये जो स्टेट है ये 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई हो गई. तो अगर मैं इसको एक दफा और चैनल से गुजारूं, एक और टाइम इंटरवल डेल्टा टी से, तो ये पी से मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड हो जाएगी, इसके साथ 1 माइनस पी स्क्वायर रूट एक और आ जाएगा, इसके साथ 1 माइनस पी स्क्वायर रूट एक और आ जाएगा, इसके साथ 1 माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा. तो इट मीन के आफ्टर पासिंग इट अगेन, which is row double dash, I will get row 00 plus p row 11 plus p minus p square row 11, फिर 1 minus p square root square row 01, and 1 minus p square root square row 10, and this is 1 minus p square row 1. जी बस वो नीचे वाली को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई के ऊपर ऐड कर दिए है. हाँ, तो इसमें मैंने वो उस टर्म को पी से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया. उधर वही हुआ है ना, लॉ जो p11 थी रो 11, उसको p से मल्टीप्लाई करके उधर ऐड किया ना, तो इसको p से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, p माइनस पी स्क्वायर रो 11. सेंस बन रही है कि नहीं? ठीक है, और ये पहले वाले लिखा हुआ था, ये अब रो नॉट था, इसमें इसको ऐड कर दिया. और if you keep doing it n times, we will get, let's say row n is row naught plus 1 minus 1 minus p power n row 11, 1 minus p n by 2, and 1 minus p n by 2, 1 minus p n. ये आ जाएगा. ये मैंने थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख दिया, आप खोल के देखेंगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. ये असल में बनता है
ये 1 - 1 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको खोलेंगे इसमें पहली टर्म आएगी माइनस एन, ये माइनस माइनस प्लस एन पी, फिर दूसरी टर्म आएगी एन समथिंग पी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जैसे ये 2 दफा किया तो ये 2p बना हुआ है ना, ये भी p है, p है, और ये माइनस p। तो when you keep doing, that's what you actually get. You can check it by induction as well if you like. अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो 1 minus p है power n, this is 1 minus p is this gamma delta t, where delta t is nothing but p over n, and in the limit when n goes to infinity, this actually becomes exponential minus gamma t, और जो ये है ये बन जाएगा एक्सपेंशियल माइनस गामा टी बाई 2। तो इसका मतलब है जो डेंसिटी मैट्रिक्स एट अ टाइम t है, आई कैन राइट इट रो नॉट प्लस 1 माइनस एक्सपेंशियल माइनस गामा t रो 1 1 एक्सपेंशियल माइनस गामा t बाई 2 रो 0 1 and 1 minus gamma t by 2 rho 1 0 and exponential minus gamma t rho 1. Make sense? Perfect. अच्छा, आप ये देखें कि हो क्या रहा है. If you start with a state, then with the passage of time, this is decaying, this is decaying, this is decaying, and you're essentially approaching this state, which makes sense, right? आप एक टाइम डेल्टा टी में प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका सिस्टम ग्राउंड में है तो वो ग्राउंड में रहेगा, और विद सम प्रोबेबिलिटी देयर इज अ चांस कि वो डिके कर देगा अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है. तो आफ्टर इन्फिनिट टाइम व्हाट शुड बी सीइंग, यू शुड बी सीइंग ग्राउंड स्टेट. ठीक है ना, अगर वो ग्राउंड स्टेट में हुआ तो ग्राउंड में रहेगा, अगर वो एक्साइटेड में हुआ तो आफ्टर सम टाइम इट्स गोइंग टू डिके, एंड दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग. क्योंकि ये भी जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा है, ये भी, और ये टर्म ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, दिस इज 0 0, राइट. और यस, सो दिस इज इट. इसमें जस्ट एक दो डेफिनेशन है विच आई एक्चुअली वांट टू इंट्रोड्यूस, कि जो ऑफ डायगोनल क्वांटिटीज होती है ना, एक इनका डिके रेट होता है, और जो डायगोनल के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं उनका जो डिके रेट है एक होता है. इसको समटाइम कहते हैं एक को T1 एक को T2 कहते हैं. So T1 is normally the inverse of this. So this T1 decay time is 1 over gamma. So this is a time in which your diagonal term decays to 1 over e of its value. और जो टाइम है जिसमें ये टर्म 1 over e को डिके करे, you can see that in this case it's like this, क्योंकि वो gamma by 2 है. This is off diagonal terms are decaying faster than the diagonal term. That's usually what happens. अगर जरूरी नहीं कि हमेशा इनका रिलेशन आपस में ये ट्वाइस का ही हो. These two in general are independent of each other. So this is sort of the decay of the pureness of the state, and this is the population decay. क्योंकि जो इसका decay है it's telling us कि जो one state is going away, और जो इनका decay is telling us कि जो coherence है starting state की वो खत्म हो रही है. In usually when a system is decohering, both of the things are going on. So the population density of different state is approaching sort of the equilibrium state, and the coherence of the state is also decreasing, and normally coherence decays faster than the population decay.
So that's the thing that we are seeing here as well. Any question? So the hope from this lecture was that you get an idea how to use cross operators to model physical situations, especially the noisy operations that happen to a quantum system. So with these examples, these are still very idealistic example. There might be other processes, that go on, because in general, for example, in I think there are d square possibilities for cross operators if our system is d-dimensional. तो खैर अगर आपका two-dimensional system है, so we have seen almost all four types of possibilities: bit phase, and this amplitude damping. And their combination can potentially be used to model any general single qubit process that is decohering your system. तो कोई सवाल? आप लोग डेंसिटी मैट्रिसेस से अभी कंफर्टेबल हुए हैं, या यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, या कुछ में इश्यूज है, या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही? क्योंकि और कुछ नहीं, तो इस कोर्स से अगर आपको डेंसिटी मैट्रिसेस को समझना ही आ जाए तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ बिग अचीवमेंट, जो कि आपके मिड टर्म 1 से नहीं लग रही। तो मिड टर्म 2 जो आपका 17 मार्च को आ रहा है, उसमें बी प्रिपेयर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट योर फ्लुएंस विद डेंसिटी मैट्रिसेस। ना सिर्फ उनका लिखना मैथमेटिक्स, बल्कि उनकी इंटरप्रिटेशन भी, कि अगर आपको वर्ड्स में एक स्टेट डिस्क्राइब की जाए, कैन यू राइट द करस्पॉन्डिंग डेंसिटी मैट्रिक्स? अगर आपको डेंसिटी मैट्रिक्स गिवन हो, कैन यू डिस्क्राइब sort of the physical situation that's represented by that instrument? जी, उसमें मिड चूंकि टाइम कम होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मिड में सवाल छोटे छोटे हों। तो सवाल छोटे का मतलब है कि वो थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मीन है 57 समथिंग। तो आप लोग मिड ले लें। मुझे एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डाउट था, तो वो अभी सोच रहा हूँ, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को भेज दूंगा, और आप पेपर फिजान पर कलेक्ट कर लीजिएगा। जी, तो ठीक है, मैं फिजान से कहता हूँ कि आप कोई दिन बता दें जिस दिन आप चाहते हैं कि कोई ट्यूटोरियल सेशन अरेंज किया जाए, तो फिजान जो है वो अरेंज कर लेंगे। टॉपिक्स भी अगर आप फिजान को बता दें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, तो फिजान काफ़ी फ्लुएंट है इनके साथ, तो होपफुली आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन जो असल फ्लुएंस है वो असल में डेवलप आहिस्ता से ही होती है, व्हेन यू सी समथिंग इन एक्शन इन डिफरेंट फिजिकल मॉडलिंग सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आज हमने किया है, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर तो होंगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में यहाँ पे नहीं होगा, और क्लासेस जो है वो मैं जूम से ले रहा हूँ, तो आप क्लास में ऐसे ही आएंगे, ठीक है? और देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्विज इन एवरी क्लास जस्ट बिफोर, वो आप यहीं पे लेके फिजान आपसे जो है वो ले लेंगे। तो होपफुली कोई टेक्निकल ग्लिच जो है वो नहीं होगा। टाइम थोड़ा सा awkward है, मैं क्योंकि यूएस से आ रहा हूँ, तो उधर सुबह के शायद 5 के करीब का टाइम होगा, 4 या 6 का। जी, 6 बजे का शायद टाइम होगा। तो होपफुली आई विल बी एबल टू टेक मोस्ट ऑफ द क्लासेस। तो अगर कोई मसला हुआ तो देन कोई क्लास ना हो सकी, तो मैं जब वापस आऊंगा तो फिर ले लेंगे। तो मेरा इरादा अब यही है कि जो 4 क्लासेस है, 3 मैं लूंगा, ठीक है? या कम से कम 2 क्लासेस जो नेक्स्ट वीक की हैं वो तो मैं जरूर लूंगा। जो उससे आगे वाली 2 क्लासेस में, एक में मिड टर्म है, तो उससे पहले वाली क्लास हो सकता है फिजान से हम कहीं कोई रिव्यू कर ले, या अगर पॉसिबल हो तो मैं वो क्लास भी ले लूंगा। इसके बाद जो है वी आर जंपिंग टू चैप्टर 9, जिसमें वी विल लर्न how to measure the distance between two quantum states, so that we get ready for error correcting course. मेरा पहले इरादा था थोड़ा जो मॉडल इक्वेशन फॉर्मुलिज्म की तरफ जाने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उसका टाइम अभी फिलहाल तो नहीं होगा, बट विल सी के लेटर ऑन
अगर टाइम हो तो हम उसको भी टच करें। ओके, सो थैंक यू।